In the previous video, we have completed the myoglobin unit, and now in this video, we are going to start the human skeletal system. अब हमें पता है कि what is the role of skeletal system in an organism. Organism में skeletal system का role क्या है? The role of skeletal system in an organism is to develop the framework to give the shape to the body. And because of the skeleton, the human being, that is the we people have a particular framework, particular shape. So the function of the skeletal system is to give the framework, to give the shape. So this is the important feature of the framework. And in this video, we are going to learn the human skeletal system. अब हमारे इसमें ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड फ्रेमवर्क ऑफ कार्टिलेजेस few in number. So human skeletal system consists of the framework of the bones and few cartilages. So first point कि human skeletal system क्या कहती है? तो human skeletal system consists of क्या consist करती है? Consists of framework of framework of इसका framework of bones and few cartilages. Framework of bones and cartilages. So human skeletal system consists of framework of bones and cartilages. And cartilages कितने हैं? तो few है, कम है. Right? So then the question arises कि bones and cartilages क्या है? So bones and cartilages, these are the specialized connective tissue like blood. So these bones and cartilages क्या है? These are specialized connective tissue. क्या है? जो बॉडी को कनेक्ट करते हैं, इसलिए these are specialized connective tissue. अब उसमें जो बोन्स होते हैं, बोन्स हमें पता है, सबको पता है कि बोन्स आर हार्डर देन कार्टिलेजेस. क्यों हार्डर है कार्टिलेजेस से? बिकॉज बोन्स जो होते हैं कि बोन्स हैज मैट्रिक्स, उनको एक मैट्रिक्स होता है एंड सरफेस. बोन्स हैव मैट्रिक्स इन विच क्या होता है? तो बोन्स हैज मैट्रिक्स विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम सॉल्ट. किससे बना हुआ है? कैल्शियम सॉल्ट से. इसलिए बोन्स हार्डर होते हैं. बोन्स कैसे है? हार्डर, which has hard matrix. ऐसा मैट्रिक्स है which has hard matrix made up of calcium salt. जो कार्टिलेज होते हैं, these कार्टिलेज जो होते हैं, these are smoother, स्मूथ होते हैं. क्यों स्मूथ होते हैं? Because it has the matrix, it has पैरेलल मैट्रिक्स. पैरेलल मतलब स्मूथ. कैसा है? पैरेलल मैट्रिक्स जो कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट से बने हुए हैं. So very clear. Human skeletal system consists of framework of bones and cartilages. That is first point. Second point, framework मतलब shape. Framework. Second point, bones and cartilages, these are specialized connective tissue. Third point, जो bones है, these are harder. Why? Because bone has the hard matrix which is made up of calcium salt. इसलिए वो harder है, like stone. Whereas cartilages जो few होते हैं, these are smooth and it has the parallel or the smooth matrix. किससे बना हुआ है? तो it is made up of chondroitin salts, जो smooth मतलब like a bricks. So you can compare the bones with stone के जैसा and cartilage मतलब brick के जैसा. Stone जिससे बना है उसका मटेरियल अलग है, हार्डर है, and brick जिससे बना है उसका जो मटेरियल है अलग है, स्मूथ है. इसलिए one is harder and one is smooth. So this is human skeletal system. अब skeletal system का रोल क्या है? Skeletal system is useful for the movement and locomotion. Skeletal system का यूज क्या है? It is used for various movement.
जो बोन से बना हुआ है। स्केलेटल सिस्टम मतलब बोन्स एंड कार्टिलेज। पहला फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन मैंने कहा कि इट इज यूज्ड टू गिव द शेप, फ्रेमवर्क, पर्टिकुलर फ्रेमवर्क टू द बॉडी। सेकेंड कहा कि स्केलेटल सिस्टम विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मूवमेंट। आप इमेजिन कर पाओगे कि खाना विदाउट जॉ, खाना खाना विदाउट द मूवमेंट ऑफ जॉ, चलना without the movement of limbs, not possible. So this become possible only because of the skeletal system, right? So this human being में जो skeletal system है, that skeletal system is divided into the two divisions. One is axial division and second one is appendicular division. So this is second. क्या है कि human skeletal system जो है, it is divided or it has the two divisions. कौन से? One is considering their location, कहाँ कहाँ है. So first one is axial skeleton, axial skeleton, right? And second one is appendicular skeleton. कौन सा? Appendicular skeleton. So human skeletal system has two parts, two divisions. First one is axial skeleton and second one is appendicular skeleton. अब क्वेश्चन अराइज कि एक्सियल स्केलेटन क्या है? तो एक्सियल स्केलेटन मतलब द स्केलेटन व्हिच इज मेड अप ऑफ द बोन्स और द स्केलेटन व्हिच इज मेड अप ऑफ द बोन्स along the central axis from skull, all that from skull to this region, उसे क्या कहेंगे? एक्सियल means the skeleton which is made up of the bones situated along the main axis. यहाँ main axis में जो bones है उसे कहेंगे axial skeleton, right? So उसे bones distributed, the skeleton which is made up of, the skeleton which is made up of bones, bones है, and ये bones कहाँ है? These bones are distributed. कहाँ distributed है? Distributed along the main axis or along the central axis, central axis of the world. हमारी central axis is, so axial skeleton is made up of the bones and these bones are distributed along the main axis, central axis. So कौन से हैं? First is this skull, first is skull. Then skull होने के बाद जो होता है that is vertebral column, जो पीछे होता है. Then ventrally there is a presence of one bone, that is the chest bone, उसे हम कहते हैं sternum. And last one is the ribs, जो vertebral column and sternum को attach होते हैं, ribs. So these four constitute the axial skeleton. कौन से? Number one, skull, skull region में जो bones है वो. Number two, vertebral column. Number three, single sternum bones. And number fourth, ribs. So these all together क्या constitute करते हैं? These all together constitute the axial skeleton and these all bones are situated along the main axis or the central axis of the body. Right? अब skull region हम consider करेंगे about the neck. यहाँ पे बना पड़ा है. This is skull region, neck region, and then there is this, and or simply, so this is skull region. Right? So skull region, this region. कौन से पार्ट होते हैं skull region में? तो first one is cranial bones. कौन से? Cranial bones. सेकेंड वन सामने आएगा cranial bones, मतलब जिसके अंदर हमारा ब्रेन प्रोटेक्टेड है, all that parts. सेकेंड वन इज द फेस के बोन्स, उसे कहते हैं facial bone.
इसे कहते हैं फैसियल बोन। एंड देन फैसियल बोन होने के बाद these are auditory bones middle ear में. Third one is auditory bones. And then last one is the single hyoid bone which is present at the base of buccal cavity. That is single hyoid bone. Right? So this तो टोटल क्रैनियल बोन्स जो है these are 18 numbers. हम उसको डिटेल में देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. फैसियल बोन जो होते हैं फेस के अंदर these are total number 14. Therefore cranial and facial together constitute the skull. And दोनों का अगर हम काउंट करेंगे तो it becomes 22. Right? Then auditory मतलब each middle ear is made up of three bones. So we have two. So total number of bones is 6. And then hyoid कैसा है? तो सिंगल. आप देखो कितने हो गए टोटल मिला के स्कल रीजन में. The first one is 8, 14, 22, 22, 23, and 6, 29. The skull has 29 total number of bones. कौन से एक्सियल स्केलेटन में फर्स्ट इज स्कल. स्कल में कितने हैं? तो क्रैनियल, फेसियल, ऑडिटरी एंड सिंगल हायोइड व्हिच इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ बकल कैविटी. टोटल मिला के 29. देन वर्टिब्रल कॉलम. तो वर्टिब्रल कॉलम में कितने हैं? तो वर्टिब्रल कॉलम हमें पता है कि वर्टिब्रल कॉलम जो है यहां से स्टार्ट होता है. मतलब हमारा जो स्कल है दैट स्कल इज एट्रिब्यूटेड विद द वर्टिब्रल कॉलम. ऐसा वर्टिब्रल कॉलम को एट्रिब्यूटेड होता है, जॉइंट होता है. राइट. एंड देन वर्टिब्रल कॉलम जो बैक साइड्स में होता है. तो वर्टिब्रल कॉलम में क्या है? तो हमें पता है कि आवर वर्टिब्रल कॉलम इज मेड अप ऑफ 33 वर्टिब्रा. कितने? 33 वर्टिब्रा. राइट. तो कौन से स्टार्ट विद दिस नेक रीजन. उसे कहते हैं सर्वाइकल. क्या कहते हैं? सर्वाइकल. मतलब कौन सा? नेक रीजन. सर्वाइकल मतलब नेक रीजन. सर्वाइकल रीजन के बाद जो आता है दैट इज चेस्ट रीजन. उसे कहते हैं थोरेसिक. एंड दैट इज चेस्ट रीजन. कौन सा रीजन होगा? चेस्ट रीजन. देन थोरेसिक रीजन के बाद दैट इज लंबर रीजन. लंबर रीजन मतलब बेली रीजन. एंड बेली रीजन के बाद दैट इज सैक्रल. सैक्रल मतलब लोअर एब्डोमेन. सैक्रल रीजन मतलब लोअर एब्डोमेन. एंड लास्ट वाला जो है दैट इज कॉर्डल. कॉर्डल मतलब टेल पार्ट. कॉर्डल रीजन मतलब लास्ट टेल पार्ट. पर हमें पता है कि ह्यूमन डू नॉट हैव द टेल बट इट्स अ रुडिमेंटरी स्ट्रक्चर, वेरी शॉर्ट स्ट्रक्चर, जिसे कहते हैं कॉर्डल रीजन. राइट. तो सर्वाइकल रीजन कितना है? तो सर्वाइकल रीजन में टोटल 7 वर्टिब्रे है. देन थोरेसिक वर्टिब्रे में हमें पता है टोटल 12. लंबर में टोटल 5 है. सैक्रल में टोटल 5 है. एंड कॉर्डल में टोटल 4 है. तो कितने हुए? 7 और 12 19. 19 plus 5 24. 20 plus 5 29. 29 plus 4 टोटल 33 वर्टिब्रे. टोटल कितने हुए? टोटल 33 वर्टिब्रे. राइट. इसलिए हमने फार्मूला किया था वर्टिब्रल कॉलम का. फार्मूला क्या? फार्मूला है वर्टिब्रल कॉलम का सी कितने हैं? 7, टीएच 12, एल 5, एस 5, कॉर्डल 4. C7, TH12, L5, S5, कॉर्डल 4. This is the formula for vertebral column. So total vertebrae 33. But जो sacral region यानी lower abdomen region में vertebrae है then 5 है like that. But these are not separated, these are fused. And fused होने से उनको calculate करते हैं 1 as a single unit. So lower sacral region कैसे है? These are not separated, these are fused like that. इसमें उनको करते हैं bracket. So it is considered as 1. In the same way the caudal region में जो vertebrae है total कितने?
4 तो वो भी कैसे है, वो भी फ्यूज, मतलब border region में vertically have 4 but these are not separated, these are fused and they form the single unit. So this is also 1. So total number of vertebrae is 33 और total number of unit अगर कैलकुलेट करोगे सेपरेट तो कितना आएगा, 7 plus 12 19 plus 5 24 24 25 20. तो वर्टिब्रल कॉलम में कितने बोन्स हैं, 26 26. स्टर्नम इज सिंगल बोन, जो हमारा वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है, सिंगल बोन, दिस इज स्टर्नम बोन एंड उसके पीछे वर्टिब्रल कॉलम, राइट, दिस इज स्टर्नम एंड रेड वाला पीछे वाला वर्टिब्रल कॉलम एंड दीज आर जॉइंड बाय द रिब्स. तो दिस लास्ट कितने एंड रिब्स कितने हैं, रिब्स कितने हैं 24, तो कितने हुए 29 प्लस 30, राइट, 30 प्लस ये 30 प्लस 26 56, this is 60 and 20 that becomes 18. So axial skeletal of human beings have, or axial skeletal of human being consists of 80 bones. कौन से स्कल 29, दोनों को मिला के कहोगे अगर पूछेंगे क्रैनियल एंड फेशियल से मिला के होगा 22, पर पूरा मिला के स्कल, क्रैनियल, फेशियल, ऑडिटरी, हायोइड, स्कल 29. वर्टिब्रल कॉलम C7 T12 L5 S5 कैसे है, ब्रैकेट. So this is the formula for vertebral column. ये क्या है, formula for VC vertebral column. कौन सा, C7 PS12 L5 S5 CA4 S5 bracket CA4 bracket because these are fused, so we consider it as a one unit. कितने, सिंगल स्टर्नम बोन जो वेंट्रल साइड में होता है, वेंट्रल साइड मतलब माउथ साइड से होता है, and then ribs कितने टोटल 24, 12 pair of ribs 24, so it becomes 80, right, it becomes 80. Vertebral column में cervical, neck region, thoracic, chest region, lumbar, that is the belly region, and sacral, lower abdominal region, and caudal, that is the tail, but human में tail नहीं होती है, so it's a very rudimentary structure, very short structure. So this is total axial skeleton में कितने numbers बोन बने हैं, 80 bones. Right. This is all about the axial skeleton. Now second one is the appendicular skeleton. Appendicular skeleton में इसको निकालना. So second one is appendicular skeleton. Appendicular skeleton में क्या है? तो appendicular skeleton consists of girdles, girdles and limbs. Appendicular skeleton मतलब the appendicular skeleton is made up of the bones which join the main axis lateral. जो central axis है उसको lateral side से, this side से laterally join, उसे कहते हैं appendicular skeleton. So appendicular skeleton is made up of bones. इससे बने हुए हैं, made up of bones. And these जो bones होते हैं, these are joined. इसको ज्वाइन है, ज्वाइन टू मेन एक्सिस, ज्वाइन टू मेन एक्सिस, बट कैसे, लैटरल, लैटरल साइड, हमारी ये मेन एक्सिस है, इस मेन एक्सिस को इस साइड, ये साइड जो कि लैटरल से, लैटरल साइड से ज्वाइन करने उसे कहते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन. अब एपेंडिकुलर स्केलेटन में कौन से बोन्स है, तो एपेंडिकुलर स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ गर्डल्स, this one and this one. So appendicular skeleton consists of girdles and उस girdle को attach है limbs, right? तो girdles कितने हैं, तो हमें पता है कि in our body there are two types of the girdles. One is pectoral girdle, कौन सी, pectoral girdle, and this pectoral girdle, this pectoral girdle is also called as shoulder, shoulder girdle. Pectoral girdle or shoulder girdle.
and then pelvic girdle, right? Pectoral girdle and pelvic girdle. अब pectoral girdle जो है, it is made up of two bones. This bone जो यहाँ है collar bone and उसके पीछे तुम अगर ऐसा हाथ यहाँ पीछे लगाओगे तो you see the flat bones and ये collar, so two bones, and each pectoral girdle is made up of two half, दो half से, this half and this half. एक हाथ में दो bones. So total bones कितने हुए? Total number of bones is 2 plus 2 equal to 4. And जो pelvic region है जिससे hind limb attached है, this pelvic region also consists of the two halves. And एक हाफ जो है, it is made up of the fusion of three bones. Separate नहीं है, fusion है, इसलिए उसको consider करेंगे. So pelvic में कितने bones होंगे? एक हाफ fusion of three bones मतलब सिंगल, दूसरा हाफ fusion of three bones मतलब सेकंड. So it is तो टोटल 4 एंड 6. अब लिम्स है तो हमें पता है लिम्स की कौन से है. तो फर्स्ट वन इज फोर लिम्ब एंड सेकंड वन इज हाइंड लिम्ब. अब जो फोर लिम्ब है hands attached to the pectoral girdle, shoulder girdle, pectoral girdle. तो each limb, एक limb में कितने bones है? तो each limb में this, this, ये वाला this पूरा and these fingers. So each limb कितने हैं? तो दो है. तो each limb कितने bones में? 30 bones. So total कितने होंगे? 30 into equal to 6. Each hind limb is also with the same number of bones, two limbs, and each limb कितना? 30. So 30 into 2 equal to 60. So total number of bones appendicular skeleton में कितने होंगे? 60 plus 60, 120. 120 plus 4, 124. Plus 2, 126. So appendicular skeleton is made up of 126. So human skeleton में total कितने bones होंगे? 80 plus 126. 80 plus 126. It becomes 206. So human skeletal system is made up of 206 bones. अब जो न्यू बोन्स होते हैं उसमें नंबर ऑफ बोन्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू एडल्ट. सो दिस इज द नंबर ऑफ बोन्स व्हिच इज प्रेजेंट इन एडल्ट ह्यूमन. कितने हैं एडल्ट ह्यूमन में? 206. उसमें से एक्सियल स्केलेटन 80 एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन 126. सो दिस इज अबाउट द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम. In the next video, we'll discuss the skull region, particularly the cranium and fascium, and then hyoid. So that both we'll discuss in detail in next video.